डेविएट के प्रांगण में हमारे हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति करें। हमारा देश और हमारा सारा का सारा विश्व उन्नति की नई दिशाओं की ओर बढ़ता चले। मैं अपने मुख्य अतिथि सुश्री स्मृति ईरानी जी, कॉलेज के प्रमुख नेता मनोरंजन के डी भंडारी, सुनील ज्योति जी हैं, उनसे अनुरोध है तो कृपा करके जो भी प्रकल्प करने में हमारे साथ शामिल program has created a niche for India in the other nations. Our growth is escalating when on the global landscape it was very subdued. This is a charisma which our Honorable Prime Minister has done. We in our institution are carrying forward that spirit, and we are promoting the students to come up with their new startups, become entrepreneurs instead of becoming job seekers. And this has brought a revolutionary change. The central government has already adopted this and the states are to follow. But we at DAVIET thought that before the state announces a policy on the startups, let us create our own policy and show to the government that we are ahead in designing the policies for the startups at our place. I indeed feel elated that at the time when we thought of creating an innovation warehouse in our campus, we have HRD Minister Mrs. Smriti Irani with us to throw light on this particular issue and guide us and help us in the way things should be. At this juncture, I want to take this opportunity to put forth a request to the Honorable Minister. We have adopted a culture of Tier 1 and Tier 2 institutions. Well, as far as the examination or the ranking of the institutions is concerned, it's okay. But I feel that the Tier 2 institutions, which are not primarily engaged in the field of research, if they want to build on the research, government funding is required to these Tier 2 institutions to develop the research capabilities. Right now, government has recognized that in the premier institutions which are private, who are doing very well in the delivery of education, but if they don't have research component, we are not helping them by the way of grants. So my humble submission is that the academic institutions which are so promising and doing well, we should consider them for the funding of the research projects as also, and we should not be depriving them of that. Now with that note, I welcome the Honorable Minister to the campus of DAVIET Institute of Engineering and Technology once again. And it's a dream come true. All of us wanted to hear the Honorable Minister, especially knowing her skills and her love and passion for the education community. So Madam, we are indeed elated with your presence in our campus, and we once again welcome you all to DAVIET Institute of Engineering and Technology. Thank you very much for having acceded to our request. मानव संसाधन मंत्रालय से ऐसे लगता है जैसे कुछ मशीनों के पुर्जे हैं, लेकिन समृद्धि जी जिस तरह इस कार्यक्रम को चला रही है उस मंच पर विराजमान जस्टिस सूद, मनोज जी और आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षाविद, महानुभाव, मेरी संगठन से संबंधित वरिष्ठ नेतृत्व, आज मेरा परिचय देते हुए मनोज जी ने ये कहा कि क्या ये संभव है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की दृष्टि से सरकारी फंड उपलब्ध कराएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को समझना जरूरी है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकों के टैक्स के पैसे से सरकारी क्षेत्र में सब्सिडाइज एजुकेशन प्रदान करने का काम करती है। हमारी टीचर्स की सैलरी प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज
के ही तर्ज पर है, लेकिन बच्चों की फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस से बहुत कम है। तो क्या आपको ये स्वीकार होगा कि मैं रिसर्च की फंडिंग आपको दूं और आप फीस अपनी उतनी ही करें जितनी कि सरकारी कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी में होती है? आज सरकारी इंस्टीट्यूशंस में हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन का संचार हो। We spoke about the Honorable Prime Minister's vision, a connection with the responsibility of integrating innovation, entrepreneurship and startup. One of the first challenges that I had to possibly look at was the fact that school and higher education had a huge gap between the two segments. पिछली सरकार में एक चुनौती ये थी कि उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बीच कोई समन्वय नहीं था, और चूंकि ये समन्वय नहीं था, इसीलिए जिस बदलाव की अपेक्षा हम उच्च शिक्षा में करते थे वो बदलाव हमें धरातल पर दिखता नहीं था। इसलिए आज जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम अपने स्कूल सिस्टम को कहीं ना कहीं संबोधित नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी चुनौतियों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक उच्च शिक्षा के संस्थानों में एक मूलचूल परिवर्तन दिखाई देना असंभव सा होगा। इनोवेशन की अगर हम बात लें तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक साइंस और मैथ्स का लर्निंग आउटकम लगभग 25% है। तो जब कक्षा 6 से 8 में ही बच्चों का लर्निंग आउटकम 25% है विज्ञान और गणित के प्रति, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले सालों में साइंस की दृष्टि से रिसर्च और इनोवेशन में इजाफा होगा? इसलिए हमारा प्रयास ये रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आग्रह किया कि इंडिया इनोवेट कर सकती है, लेकिन साथ ही उस इनोवेशन में फ्रूगल इकोनॉमी का एक दर्पण, एक चित्र दिखाई देता है। इसलिए शायद विश्व के इतिहास में मार्स मिशन सबसे कम पैसे में और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन हिंदुस्तान का रहा, जो अपने आप में अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर एक अनोखी छाप छोड़ गया, एक इतिहास बना गया। तो इस इनोवेशन और आविष्कार की दृष्टि से स्कूल में हम क्या बदलाव लाए? हमने पिछले 1 साल में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की। यह अभियान प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिखा, क्योंकि ये प्रयास मात्र सरकारी स्कूलों में रहा, जिसमें हमने IITs के हमारे प्रोफेसर्स के माध्यम से सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। हर जिले में 25 लाख रुपए का साइंटिफिक लर्निंग एड भेजा, जिसमें पोर्टेबल लैब भी उपलब्ध कराया गया। और इसका परिणाम ये, क्योंकि साइंस तो हमेशा एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर ही आगे बढ़ता है, इसका परिणाम ये कि उत्तर प्रदेश के एक जिले औरैया में विख्यात प्रोफेसर HC वर्मा ने जाकर कुछ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जब प्रशिक्षित किया, तो हमने ये देखा कि 27 गांवों में प्राइवेट स्कूल छोड़कर अब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने अपने आप को ज्यादा अपनी सुविधा मानते थे, क्योंकि द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशन। One of the biggest challenges that the education sector possibly faces is the fact that अगर आप किसी विद्यार्थी से मिले स्कूल में, तो वो आपसे कहेगा कि कॉन्सेप्ट को समझने में चुनौती है। There are many a times where students when they go home, their parents tell them, टीचर पढ़ा रहे थे तो क्या ब्लैक बोर्ड ढंग से नहीं देख रहे थे, या फिर टीचर समझा रहे थे तो क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? बच्चे की सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि चूंकि छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट की दृष्टि से उसके लिए चुनौती रही, इसलिए जैसे जैसे वो बच्चा एक के बाद एक क्लास में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे इस बात की चुनौती का सामना करना पड़ा कि वो कॉन्सेप्ट ढंग से समझ नहीं पा रहा।
जिसका परिणाम ये कि लर्निंग आउटकम्स आगे की क्लासेस में साइंस और मैथ्स की दृष्टि से और कम होता गया। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, पढ़े भारत बड़े भारत। लोग कहते हैं कि हाँ, सरकारें कार्यक्रम बहुत शुरू करती है, उसका परिणाम दिखाइए। एक साल में हमने परिणाम देखा। इन स्टैंडर्ड 1, 2 and now 3 we started pushing early reading, writing and numeracy in government schools, wherein now we ensure that even government schools have fancy reading corners as you see in private schools, but at a very, very low cost, which is affordable for every individual. आज कालियारी से जब मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स आज माता पिता के सर पर एक तलवार बन के लटकते हैं कि कब फी हाइक हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब फीस के बारे में ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं होगी पता नहीं चलेगा। चुनौती ये है कि कानून एग्जिस्ट करता है। यू कैन नॉट हैव अ नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन having a fee paid at a private institution. As an engineering institution, I am sure you know that recently the government of India has submitted the Shri Krishna Committee report to every state, so that every state has a regulatory mechanism to ensure that there is no spike in fee hike in the engineering and management sector. Similarly, the law exists for even the school sector, but the challenge is how many are stepping up and accepting their responsibility in the public domain with regards to their own institution. मैं ये बात आज इसलिए कह रही हूँ कि innovation dies a very early death when children are not encouraged to think out of the textbooks. And the problem is that we presume that thinking out of the curriculum and textbooks, that critical thinking, creative parameter only exists in the private sector. और उसी भय के मारे माता पिता उन सेगमेंट्स में, उन इंस्टीट्यूशंस में जाने से कतराते हैं जहां उन्हें लगता है फीस ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आज अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से हमारे राष्ट्र को देखें तो क्या हम अपने छात्रों को इनोवेशन को बिजनेस मॉडल तक कैसे पहुंचाना, अपनी इनोवेशन के लिए फाइनेंस कैसे प्राप्त करना, अपने इनोवेशन की पेटेंटिंग कैसे कराना, क्या इसका ज्ञान भी अपने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों को राष्ट्र भर में देते हैं? उदाहरण हेतु आपने आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से रखा। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बहुत ही अनोखी घोषणाएं की। एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया। अगर हम मात्र स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया में 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ की राशि बैंक उपलब्ध कराती है अगर आप किसी बिजनेस मॉड्यूल को बैंक के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उसमें विशेष रूप से महिला और डिसएडवांटेज कम्युनिटी के सिटीजन्स को प्रावधान दिया गया है एक विशेष, ताकि उनकी आर्थिक उन्नति से राष्ट्र में एक बैलेंस्ड हम इकोनॉमिक ग्रोथ देखें। ये भी स्टैंड अप इंडिया का हिस्सा है कि अगर वो सिंगल पर्सन एंटरप्राइज नहीं है, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उसमें भी कंट्रोलिंग 51% स्टेक महिला का या डिसएडवांटेज कम्युनिटी के सिटीजन्स का ही होगा। प्रश्न उठता है कि कितने छात्र इस स्कीम के बारे में जानते हैं। एक और विषय, हम सब ने सुना मुद्रा योजना के बारे में। शायद ऐसा कोई ही नागरिक होगा आज इस सभागार में जिसने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में ना सुना हो। अगर आप किसी महिला से पूछें जो एंटरप्रेन्योर है लेकिन मध्यम वर्गीय अथवा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है कि एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए सबसे पहली दरकार क्या है, तो वो कहेगी पैसा। एक जमाना ऐसा था, या तो अपने परिवार से पैसा मांगती अथवा अगर कोई जेवर होता तो उसको गिरवी रखती और उस कोलैटरल के आधार पर वो लोन लेकर छोटा सा एक प्रयास शुरू करती। मुद्रा योजना के तहत पहली बार हमने प्रधानमंत्री जी को ये कहते सुना कि यू कैन गेट विदाउट कोलैटरल अ लोन ऑफ 50,000 rupees to up to 10 lakhs from the bank if your papers are in order and your business plan makes sense.
The question today is this: how many of our own institutions, in the spirit of promoting entrepreneurship, tell women not only in the institution but also around the institution about this possibility for them to be economically independent? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही के आंकड़े ये बताते हैं कि मुद्रा योजना के माध्यम से 79% जो बेनिफिशरीज हैं वो सब की सब महिलाएं हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर से कहती हूँ कि आपके लिए ये मात्र एक परसेंटेज है, एक स्लैब है, लेकिन इसके पीछे का आप सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझिए। जो फाइनेंशियल सर्विसेज से मुखातिब हैं या समझते हैं, उन्हें शायद ये डेटा उपलब्ध हो कि बैंकिंग सेक्टर में 100% रिकवरी अगर किसी सेगमेंट से होती है तो वो महिलाओं से होती है। इसलिए मैंने बैंकर्स से कहा कि आप काफी लकी हैं कि 79% of your borrowers under the Mudra Yojana are women, because this assures that you will have 100% payback. The other aspect that needs to be seen in this particular program is that the Mudra Yojana signifies the capacity of Indians to think out of the box, to make a project and to submit a financial plan and have it accepted and get a loan. This actually is significant because it shows that 79% women under this program might not have had such a great amount of entrepreneurial education behind them, but they had enough of entrepreneurial spirit to have their projects accepted and get that kind of financial backing from a bank. How many of us, very honestly, without help, can fill an entire loan form for a bank? Imagine the spirit, the confidence that this shows about the women in our country. And why I speak such is not to become a female minister, but because I recognize that there have been studies done across the world which have shown that when the economic capacity of women in a society increases, you see that fundamentally the human development index of that particular society is far better, because spending in welfare segments is much more, in education and health is much more. We also today speak of startups. There are many young amongst us who have that desire, that dream to be the next Flipkart. But how many of their ideas are beyond the current trend in the market? And how many of our students are encouraged to think out of the box, go out of the e-retailing, e-housing business and think of something totally new? I have known of students who have gone to the deepest of villages in our country, taken engineering solutions and added it to agriculture, and also equally added it to market facilities so that उस किसान को अपने उत्पादन की बहुत अच्छी कीमत मिले। उसका एक उदाहरण सरकार की ओर से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से मार्च के महीने में ई महिला हाट शुरू किया। अब कई लोग ये कहते थे कि औरतें गांव में पापड़ बना रही हैं, मसाला बना रही हैं या फिर कुछ एम्ब्रॉयडरी क्रोशे कर रही हैं, वो कहाँ जाके आपके पोर्टल में रजिस्टर करेंगे? लेकिन एक महीने में 10,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड। एंड टुडे while I speak to you in this hot afternoon of May, over 2 lakh women are selling their produce leveraging technology. So when you talk about startups as individuals and institutions, how much of our students are encouraged to think out of the box, are encouraged to leverage that inherent talent and quality of work that our local artisans have, and then help them connect to the rest of the world. That in itself is another challenge that we will overcome together, is my belief. But in this whole process, what is the role of academia? When I look at teachers, and I've said this often,
one needs to understand that how do we define education? For us, is education just that one paper which certifies how many marks you got? For us, is education just that little paycheck that you get from your campus placement? Or for us, education is helping build a spirit, a never say die attitude in an individual who possibly does not belong to advantaged means. For us, is education building that one child who, when they look at their national flag, they beam with pride. When they see an elderly, they help them cross the road. For us, it might seem like a very insignificant melodramatic aspect of education. But as we grow older, we realize the very strength and the uniqueness of that philosophy of education. What is the role of academia? Possibly the senior teachers would say that they have seen such a time in the education sector जब हम टीचर को भगवान मानते थे. आज आप यहाँ जस्टिस सूद हैं, कालिया जी हैं, भंडारी जी हैं, उनसे पूछिए. आज भी बड़े फक्र से शायद उस मास्टर जी को याद करते होंगे जिसने कान पकड़ा लेकिन जीवन में कुछ ऐसा सिखाया जो आज भी वो भूले नहीं. क्या वो सम्मान आज हमारे शिक्षकों के प्रति नेचुरली छात्रों में उमड़ता है? कितने हमारे शिक्षक ऐसे हैं who just are trying to survive from one paycheck to another, और कितने शिक्षक ऐसे हैं who are surviving from one student to another. कितने शिक्षक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी आज का ये करिकुलम है, इसको पढ़ाना है, आज का इतना सब्जेक्ट मैटर है, इसको पढ़ाना है. और कितने शिक्षक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी दुनिया में यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है, मैंने खुद बैठकर रात को अध्ययन किया, तो ये नॉलेज तुम्हारी किताब में ना सही लेकिन मेरी अपनी रिसर्च से ये मुझे प्राप्त हुआ है. तुम बताओ छात्रों, इस पे क्या हम चर्चा कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ आवर टीचर्स आर बीइंग सपोर्टेड फॉर थिंकिंग आउट द बॉक्स? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. किसी ने मुझसे कल पूछा, मैं लखनऊ में थी, कि आपकी बहुत बड़ी सफलता ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की शुरुआत की. 99% अब हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट खुल गए. लेकिन बहन जी इसका आपके एकेडेमिया से तो कोई लेना देना ही नहीं है. मैंने कहा बिल्कुल गलत. इस 99% बैंक अकाउंट्स को सर्विस करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को अब ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और उन प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए ट्रेनर्स और टीचर्स की और ज़रूरत है. That means when we look at growth in one particular program, it actually has an overlapping impact on our entire system. How many of us today see our regulator supporting, and I'm saying this as minister, new knowledge avenues? इस चुनौती को मैंने जब शिक्षकों के साथ बैठकर समझा तब दो निर्णय लिए. एक कि आगामी 1-1.5 हफ्ते में यूजीसी एक नए रेगुलेशन को प्रस्तुत करेगा जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी में नया डिपार्टमेंट, नया कोर्स खोलने के लिए बार बार दिल्ली में रेगुलेटर के पास भागने की जरूरत नहीं. इफ यू हैव accreditation of the highest order, then you are academically autonomous to start new departments, new courses. You don't have to go and do namaste to the regulator. This being an engineering institution, through the AICT, we have facilitated an MOU with Stanford University. They are learning outcomes and benchmarks in engineering, which are tested across the world in conjunction with Stanford University, which was never available for India. This year, we shall roll out that MOU so that 31 lakh engineering students benefit across the country. But one of the big challenges today that we see in engineering institutions, we have 8 lakh seats vacant. And what do those vacant chairs tell us? It says possibly our curriculum is not as upgraded as our students would like it to be. And that is why I have within my realm, my jurisdiction, institutions like NITs. And for the first time in the history of our country, we have entered into an agreement with MIT, the Massachusetts Institute of Technology,
to upgrade the entire NIT curriculum. And I implore today that if we seriously want a connect between academia, innovation, entrepreneurship and facilitate startups, then we need to look at new knowledge across the world in terms of innovation, engineering, technology and management. It is only when we upgrade our curriculum, our teachers have the capacity to absorb that new curriculum and reach it to the students. But we as institutions have to be ready to facilitate that change. So if your institution would like to give me such a proposal of facilitation, I am more than happy to help. Because it is under this Prime Minister that we started a program called ज्ञान. ज्ञान क्या है? अक्सर जब हम विद्यार्थियों से मिलते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि अगर आप किसी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं तभी आप किसी विदेशी शिक्षक से या तो मिल पाते हैं, अथवा अगर आपके माता पिता आपको विदेश भेजें तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप किसी विदेशी संस्थान में विदेशी किसी टीचर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ज्ञान में हमने पहली बार प्रपोज किया कि हर इंस्टीट्यूशन जो सरकारी ज्यूरिसडिक्शन में है वो हमें सब्जेक्ट वाइज कोई इंटरनेशनल एकेडमिशियन का नाम और कोर्स प्रपोज करे। हमने कहा वी विल फैसिलिटेट that international academician to come into government institutions and colleges and universities and teach in India at no extra cost of the student. 400 foreign academicians in the past 1 year have come and taught in Indian Sarkari institutions, and currently 85 international academicians are teaching across Indian institutions in the government sphere. That is the kind of interaction that we are facilitating. What is the result of such an interaction? We see a large number of joint research projects that have taken off. We ensure that the sessions of teaching are jointly conducted between Indian faculty and foreign faculty, so that the capacity of the Indian faculty is also enhanced, and the interaction that we see develop between the Indian student and the foreign faculty is an interaction that many foreign academicians have sustained after they have gone back to their own institutions. So there is much, as you have said rightly, that the vision of the Honorable Prime Minister has fostered in terms of innovation and entrepreneurship in the academic area, but I am also conscious of the fact that much more needs to be done, because I have received a legacy of challenges. I have received a legacy where the last education policy was made 30 years ago. But that is the legacy that we need to, of challenges, convert into solutions. I would only appeal if there are any new initiative, innovative methodologies that you would like to share. I am more than happy to accept it, and I am grateful that you called me this afternoon for this interaction with this august audience. Jai Hind. स्वागत करते हुए मैंने ये कहा था कि माँ सरस्वती की विशेष आशीर्वाद प्राप्त इस मेधा ने आज साबित किया है कि ज्ञान की भी इतनी श्रद्धेय हो सकती है, और इनके एक एक शब्द से आपको लगा होगा कि हिंदुस्तान एक ऐसे यान के ऊपर सवार है कि अंतरिक्ष उससे बहुत दूर नहीं है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये ही वो लोग हैं जिनके हाथों से कल हमारा नया भारत हो सकता है। हमारा इनके बारे में एक चित्र बड़ा सुंदर और अनोखा सा था, बहू की तरह आंसू बहाना या सीता की तरह नए रामायण का नया रूप लिखने का प्रयास करना। लेकिन जो आज हमने देखा है वो लगता है कि सचमुच नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को अपने उस महान संगीत यज्ञ का एक वाद्य बनाया है जो आज हमारे सामने एक नई प्रस्तुति लेकर, एक नई धारा लेकर, एक नया निर्माण लेकर आ रहा है। मैं क्षमा चाह रहा हूँ अपने बहुत से छात्र छात्राओं, अध्यापकों से कि वो बहुत सी बातें करना चाहते थे, बहुत से सवाल पूछना चाहते थे, बहुत सी उलझनों का उत्तर चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर केवल हमारा हक नहीं है, सारे हिंदुस्तान का हक है। इनके ऊपर एक एक शिक्षा संस्था और एक एक नागरिक का हक है। इसलिए सवाल जवाब का सिलसिला फिर कभी
मैं नरेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारी ओर से इनका धन्यवाद करें।